I picked the wrong book. It is going to be. अच्छा अच्छा आप हाँ देखिए क्या है RX plus aqueous KH will give me R आवाज OH अरे ये देखिए आप ना KOH है यहाँ पे आप उल्टा सीधा मत बोलिए ना प्लीज KOH देखिए ढूंढिए रिएक्शन में जो हमने ऐसे स्पाइडर वेब टाइप को बनाया था ना उसमें देखिए KOH कहाँ है aqueous KOH क्या प्रोडक्ट मिल रहा है ROH plus KS. ROH हाँ ये इंपॉर्टेंट है अल्कोहल मिल रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए था वी शुड बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस CH3 कार्बन CH3 CH3 CH2 एंड OH ऐसे कुछ मिलना चाहिए था हम लोग को ये सर टेल मी Yes. okay but we don't get this product we get some different product we get a very interesting product we get the OH here okay and the CH3 travels here okay so first of all write this and we have to see why are we getting this type of product rather than the OH with replacing the Br it is getting attached on some different carbon itself right Chaliye. So if we write this write the mechanism of following reaction then you'll understand what is happening here done yes or no tell me did you write the question Yes. okay now look here in this reaction when we write the mechanism so first of all what we will see this is what we have written this example and said that neopentyl bromide or neopentyl chloride they or neopentyl halide they will not go SN2 first thing you will write since neopentyl halides do not undergo SN2 the above reaction will happen via SN1 will happen via what will happen via SN1 acha what happens in SN1 SN1 mein first step is what is the first step in SN1 So formation of carbocation. It is the formation of very good formation of carbocation हनीफा आपने lectures देखे yes or no tell me yes हनीफा did you watch the lectures no why क्या हो गया Sir, I get limited Wi-Fi, so it's getting better. नहीं तो मोबाइल में इंटरनेट मतलब मिलता है कितना 1.5 GB मिलता है एटलीस्ट राइट Yeah, I don't have a SIM right now. Once I get a SIM. अच्छा अच्छा ठीक है सिम नहीं है तो फिर हाँ फिर तो दिक्कत हो जाती है okay formation of carbocation so formation of carbocation will be CH3 C CH3 CH3 CH2 Br now this Br will break the bond and it will take the electrons also with itself CH3 carbon CH3 CH3 and there will be CH2 positive there will be CH2 positive and Br negative okay now this is the carbocation and you need to have a very good look don't write anything now just listen
So I'm making the carbocation once again, but I'm making it in a different way. I'm making it in this way, that the carbon is just bond line structure. Okay. And here. And here we have a positive charge. Yes or no? Can all of you say this? Same thing now? Yes or no? This is the same thing? Okay. Now, when carbon has positive charge, that means it is not making one bond, and that is why it will have a p orbital that is vacant. ये कितने लोगों को पता है कि कार्बोकेटाइन में p orbital vacant होता है? Tell me. Yes, fine. What about others? रिफत एंड हनीफा, ये बात समझ में आ रही है? कुछ तुक बन रहा है Yes, इसका? sir. तुक बन रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है तो ठीक है. This is the pi. So this is the p orbital here. Okay, this is the p orbital, and also you can see that this type of orbital will be there for CS3 and CS3. Yes or no? Tell me. Correct? Hai? Yes. Yes. Now I am showing this blue. That means it is vacant, and this is red. It is full of electrons. It is what? It is full of electrons. Now there is a possibility. क्या बोल रहे हैं? There is a possibility. Reversible होता है, but there is a possibility that the electrons with CS3s ना, तो CS3 वाला bond का electron है, it will break and it will move here. ठीक है? Why? Because electron source, यहाँ पे electron ज्यादा है, and you can see that the direction or the orientation is very favorable. यहाँ पे electrons है, यहाँ पे transfer आ सकते हैं यहाँ पे. ठीक है? So what happens actually is get something like this, and here the whole CS3 comes and it makes a bond like this. Okay, and this ये नीचे वाला bond as it is है, तो एक CS3 ने travel किया and you have got something like this, and there is positive charge here now. ये transformation समझ में आया? Yes or no? Tell me. Yes. Yes. Rifat and Hanifa, can we say that ये हो सकता है? Yes. Yes. Okay, ये हो सकता है, right? Because why? Because we have electron source and we have electron sink or electron poor site also, electron rich site also, electron poor site also. So that's why this bond will break and something like this will happen. Something shift is happening. What shift is happening? We say that methyl is shifting CS3. So we say that it is methyl shift. Okay, it is what? It is methyl shift. अच्छा, अब ये बताइए. Now, what has happened? Essentially, this was 1 degree carbocation and now it is 3 degree carbocation. Yes or no? Tell me. Yes. Correct Yes, है? Yes or no? है ना? Yes. 1 degree से 3 degree तो ये चला जाएगा, but 3 degree से 1 degree आने में ये हिचकिचाएगा. Yes or no? Tell me. It will Yeah. have some reluctance because 3 degree is more stable. Yes or no? Hanifa and Rifat, Yes. you know this, right? Now, what can happen? Generally, क्या होता है? Now, whenever you get carbocation, this type of methyl shift happens, but those methyl shifts are reversible in nature, and what they do, they mainly happen and they keep in the reactant sites only, here only. But since it is 1 degree to 3 degree, what is going to happen? 1 degree to 3 degree, the 3 degree is more stable. So interconversion हमेशा होता रहेगा 1 degree to 3 degree and 3 degree to 1 degree. But the rate in which 1 degree is 3 degree, 1 degree is converting to 3 degree, it will be very high. ये बहुत ज़्यादा होता रहेगा. And the rate in which 3 degree is converting to 1 degree, it will be very low. And that is why the reaction will proceed through this carbocation, the more stable carbocation, rather than the 1 degree carbocation. Now, if I look at this carbocation, now we call this step as the rearrangement. Of carbocation. Now, rearrangement of carbocation, if first haloalkane, haloarene, in this chapter, they have not mentioned it explicitly in NCERT, but in alcohols, they have mentioned it explicitly. And you have some applications of rearrangement in this chapter also. That is why I'm teaching this here. Okay, so rearrangement of carbocation. 3 degrees more stable. So now the third step will be attack of nucleophile. So what we will take? We will take this particular carbocation, which is CS3, followed by C, CS3, CH2, CS3. There's a positive charge here. What is the nucleophile in KOH? OH negative is our nucleophile, and this OH negative will attack on this carbon, forming CS3, OH, CH2, CS3, and there is CS3. Sorry. Please write this down.
Since neopentyl halides don't undergo SN2, the above reaction will happen via SN1. First thing is that because ये 1 degree है, तो generally you will think that it will happen with SN2. But in last lecture we wrote this point that neopentyl halides they don't undergo SN2 because of the bulky group on alpha carbon. So please write this down. Done, sir. What about others? Done? Yes. Okay. Now I'm writing some more examples. ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा. और in all of them there will be some kind of shift will be happening. Okay. With rearrangement of carbocation. Number 1. एक आपको जो important है rearrangement that is ring opening rearrangement. उसमें क्या होता है? Please look. You have here CH2. Let us say here you have I. Okay, CH2I. Then first of all, what will happen? This will get CH2 positive, CH2 positive. Now it is what? It is 1 degree carbocation. It is 1 degree carbocation. So what will happen? One of this bond, it will shift here. ठीक है, बिल्कुल हम बता रहे हैं, इसमें बहुत आराम से बनाइएगा. How are you going to make this? First of all, you will make everything other than this bond. ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड टूट रहा है. Now, please see this carbon. अगर हम नंबर करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? So what is happening? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Now the sixth carbon is getting attacked on which carbon? Tell me all of you. जो नया बॉन्ड बन रहा है, that is between which two carbons? Yes. Yes, नहीं, किस दो, कौन से दो कार्बन्स के बीच में? 6 and 6 and Five, first one. 4, हनीफा जोर से बोलिए ना. 1 and 6. 1 and 6, राइट? दिख रहा है सबको? रिफत दिख रहा है आपको? Yes. ठीक है, ये बॉन्ड टूट रहा है, तो ये 2 से जो बॉन्ड टूटेगा 6 और 1 में बनेगा, राइट? सो यू विल मेक अ बॉन्ड लाइक दिस. ठीक है, ये गंदा स्ट्रक्चर पहले बना लीजिए. अब आपको क्या दिख रहा है? दिस होल एंड वेयर विल बी द पॉजिटिव चार्ज नाउ. यहाँ बॉन्ड कहाँ से टूटा है? सेकंड कार्बन से. जहां से बॉन्ड टूटा है वहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. Okay, wherever you have broken the bond, there will be the positive charge. So positive charge will be on the second carbon. Okay. Now what you are going to do? You are going to just 6 carbon कैसा होगा? You will make a cyclohexane type of structure and you can just write positive charge anywhere. अभी तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे because all the carbons are same here. Okay. ठीक है. अब इसके आगे क्या होगा? There will be attack. Let me write OH negative अगर है यहाँ पे. So you will get a product like this. A second. OH. ठीक है. So as you can see, 5 member से क्या हो चुका है? 5 member से 6 member ring. तो देखिए 5 and 6 member rings are fine. ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा. 4 से 5 बन सकता है, 5 से 6 बन सकता है.
Right, next. Let us say you have something like this. CS3, C. There is a hydrogen here. Here you have CS3, followed by CH. Here you have I. And let us say CS3. And we are reacting this with, again, same aqueous KOH. Please listen, don't write anything. First step will be formation of carbocation. It will be CS3, carbon, hydrogen, CH, CS3, and a positive charge here, and there will be CS3 group here. Okay. Now what is going to happen? If this CS3 is going there, it is not going to change anything. So what will happen? This hydride will shift here. It is known as hydride shift. And you will get CS3, C positive, because the bond has broken from this carbon, CS3. Now this hydrogen is shifting in this carbon, so it will get in CS2 followed by CS3. So here you had what? Here you had 1 degree. Here it is 3 degree. Whether the reaction will happen with OH negative. OH negative क्या किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ हो सकता है ये. You will be getting CS3C, OH, CS2, CS3, and CS3. Please write this down. Let me know when you're done. This one is known as the ring opening. This is known as hydride shift. Done everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yeah. Okay. Write a question. Write the major products for following. यहाँ पे we will write the major products. कल के notes है ना सबके पास? Yes or no? Please tell me all of you. Yes, sir. Okay. ठीक है, रीअरेंजमेंट का ध्यान रखिएगा. रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे, है ना? इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा. You can also have, if there is 4 carbons like this, and you have CH2, I plus let us say KCN. यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, 5 कार्बन का बन जाएगा. थर्ड, चलिए, write the product for these 3. So should we show the whole mechanism?
नो जस्ट राइट द प्रोडक्ट दैट्स। Okay, sir. लेकिन मैकेनिज्म से ही आपका ये आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है। अभी मत ट्राई कीजिए डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की। राइट द मैकेनिज्म, ड्रॉ द कार्बोकेटाइन, डू द शिफ्ट एंड देन राइट द प्रोडक्ट। Do it and then send the photos, okay? If you're getting stuck, just let me know. Hanifa, Rifat, Zaid, all of you. Okay. ठीक है, बट ड्रॉ द कार्बोकेटाइन उसके बाद भेजिएगा ना, एटलीस्ट ड्रॉ द कार्बोकेटाइन। होप यू कैन ड्रॉ द कार्बोकेटाइन हियर।
What happened, guys? No one has sent me the answer. Hanifa, Rifat, Zaid, नहीं आ रहा है? Yes, Hanif, can you answer me at least? Doing it, sir. Okay. How much time will it take, Hanifa, approximately? Uh, 5 minutes, sir. 5 minutes. Achha. So I'm stuck in the rearrangement of carbocation. I got the Which one? rearrangement. Which one? First, second, or third? Sir, I'm in the first one. First one. Send me whatever you have done. है ना? Send me whatever you have done. नहीं तो आपने कार्बोकेटाइन कहाँ बनाया है? रिफत? रिफत, am I audible? Yes. देखिए कभी हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाया? नहीं बनाया ना? I've always made a carbocation. Yes or no? Tell me. हाँ, yes. देखिए फर्स्ट वाला जो सवाल है यहाँ पे, इट इज वेरी सिमिलर. यस और नो? ओनली आयोडीन एंड बीआर का फर्क है, राइट? हाँ, yes. कर कीजिए, अब कीजिए. एटलीस्ट मेक द डायरेक्ट, हम वही तो कह रहे हैं, डायरेक्ट कभी नहीं बनेगा. मेक द कार्बोकेटाइन, देन ओनली इट विल हैपन.
What about Hanifa? I'm doing that. Can you show me? Can you send the whatever you have done till now? Same for Zad. Please send whatever you have done till now. Sir, it's going to be done. I will send. Okay, okay. Zad, do you have a brother? Yes, sir. In which standard? So it's first standard. अच्छा बहुत छोटे हैं अच्छा रिफत फर्स्ट वाला हुआ Yes, Rifat. What about the first one? No, sir, it's I got it. आ रहा है ना ठीक है करके फिर हमें भेजिए ठीक है So for the first one, can we do it by beta elimination method? Can you do it by Beta elimination method. ये आपको ये टर्म कहाँ से पता चला बीटा एलिमिनेशन और ये आप टर्म अभी यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं व्हेन डज बीटा एलिमिनेशन हैपेंस क्या ये एजेंट है उसके बताइए HBR. HBR बीटा एलिमिनेशन का ये आपको मतलब ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है लेकिन सही से याद नहीं आ रहा राइट हनीफा Yeah. हाँ तो छोड़ दीजिए उसको गलत याद आ रहा है मान सकती हैं इस बात को Yeah. ठीक है वो गलत याद आ रहा है जो भी याद आ रहा है आपको अभी बीटा एलिमिनेशन अभी एलिमिनेशन पढ़ा ही नहीं हमने अभी तक सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हैं ना अभी राइट एंड व्हेनेवर देयर इज एन एलिमिनेशन यू विल ऑलवेज सी हीट देयर एंड ये शायद इस वजह से होगा क्योंकि अल्कोहलिक KOH में देयर इज एलिमिनेशन एंड वी आर यूजिंग हियर aqueous KOH इट इज अ क्वेश्चन आल्सो इन CERT that we will do after we are done with elimination okay so it is not elimination these are all substitution reactions Zaid आपका नहीं आया अभी तक send me whatever you have done दूसरी अब बोलना ना पड़े हमें बार बार send me whatever you have done till now all of you कार्बोकेटाइन आई वांट टू सी कार्बोकेटाइन अगर आपसे नहीं हो रहा तो कार्बोकेटाइन पहले नजर आना चाहिए ठीक है डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल गलत बताया आपने जैद बिल्कुल गलत है हमने कभी इस तरह का स्ट्रक्चर आप ये क्या मतलब हमको ये समझ नहीं आ रहा है एटलीस्ट यू कैन कॉपी इट राइट जो ऊपर हमने सवाल किए उससे आप कॉपी भी कर सकते हैं ओके वेटिंग फॉर हनीफा एंड रिफत प्लीज सेंड मी व्हाटएवर यू हैव डन टिल नाउ देयर इज नो कार्बोकेटाइन अच्छा पहले वाले में बनाया लेकिन आप इतना छोटा क्यों लिख रही हैं आप सेकंड वाले में आपने कार्बोकेटाइन ही नहीं बनाया नहीं दिस इज हनीफा देखिए थर्ड वाला सवाल देखिए आप हनीफा ठीक है जी. count the number of carbon atoms in reactant and product count and tell me how many carbon atoms are there in reactant
5, एंड अब प्रोडक्ट में कितने कार्बन हैं आपके पास? 3. ठीक है, दूसरी बात, AgCN से जब रिएक्ट होता है तो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड डू वी मेक? कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड बनता है या CCN होता है या CNC होता है? CNC. ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा ना, क्लासिक केस ऑफ। नाउ हम बार बार क्या कह रहे हैं, कार्बोकेटाइन बनाने। कार्बोकेटाइन के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ जैसा हम कह रहे हैं वही कीजिए, और फिर से हमें सवाल फिर से हमें भेजिए। रिमूव द Br हियर, ठीक है। रिमूव द Br एंड ऐड पॉजिटिव चार्ज जिसमें Br लगा हुआ है। व्हाट यू हैव टू डू? रिमूव Br, तो ये बॉन्ड के साथ हटाइएगा, ठीक है, ये नहीं कि बॉन्ड रखा हुआ है Br को हटा दिया। रिमूव हाइड्रोजन, ठीक है, जो भी X ग्रुप है आपके पास, Br है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे Br है, एंड ऐड ऑन दैट कार्बन। चलिए भेजिए। You don't have to do anything else. रिफत, हनीफा एंड जैद, समझ में आया क्या करना है? Yes. भेजिए। कहाँ बनाया आपने? रिफत, हमने तो ये OH वगैरह नहीं डालने के लिए कहा ना। प्लीज सेंड मी ए क्लीन फोटो अगेन, इसमें हमको समझ नहीं आ रहा कहाँ देखना है, ठीक है रिफत? दूसरे पेज में बनाइए साफ से। Sir, we have to remove the OH. सॉरी, We have to remove the OH. हमने क्या कहा है आपसे, ये पढ़िए क्या लिखा है। रीड इट एंड टेल मी व्हाट इज रिटन। रिफत, रिमूव, Add, रिमूव व्हाट? remove the halogen and add. हाल, ठीक है, तो उतना करके हमें भेजिए फोटो, ठीक है। ओके जैद, समझ में आया क्या करना रिफत? यस और नो, टेल मी। Yes. ठीक है, हनीफा वेटिंग फॉर योर आंसर। So can you explain this one? I'm not getting it. कैन यू रिमूव द Br ऐसे? कैन यू ऐड पॉजिटिव चार्ज हियर लाइक दिस? Yeah, I बस did वही that करने, in the. हाँ, सेंड मी दैट ओनली ना। Okay. हाँ, डू दिस फॉर ऑल ऑफ देम ना, फॉर सेकंड थर्ड आल्सो, डू दिस फॉर ऑल ऑफ देम। आई मीन हैव एटलीस्ट, ये मतलब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है आपने यहाँ पे प्रोडक्ट क्यों बनाया है। एटलीस्ट हैव सम आइडिया ऑफ स्पेस एंड थिंग्स ना, लाइक कहाँ पे लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा नहीं रहेगा। रिएक्शंस आप लिख रहे हैं और प्रोडक्ट आपका नीचे बन रहा है। एटलीस्ट मेक द एरोज करेक्टली, कि अगर आप प्रोडक्ट नीचे बना रहे हैं तो यू विल मेक द एरोज लाइक दिस।
नहीं तो क्लीन नहीं रहेगा तो बाद में यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज कौन से रिएक्शन का कौन सा प्रोडक्ट है। हाँ, डू दिस फॉर ऑल ऑफ देम ना। You don't have to add anything, hydrogen कुछ नहीं ऐड करना, बस CH2 plus positive. This you have made. CH2 positive. Do for others and send me fast. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी कीजिए इसको। ये तो बस यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें आयोडीन भी नहीं बनाना, पॉजिटिव चार्ज लगाना है बस। Done, Hanifa and Rifat, done for these two. Okay. Again, हनीफा, लास्ट वाले इसमें देखिए आपने कहाँ से हटाया है, CH3 एक मिसिंग है वहां पे, देखिए। Okay, sir. अब ये चीज तो आपको कोई सिखा नहीं सकता ना कि आपके कार्बन्स जो हैं वो तो सेम रहेंगे उनमें जब रिएक्शन नहीं, और जब हमने कहा हुआ और कुछ नहीं करना है। सो इट इज जस्ट दैट यू आर नॉट टेकिंग केयर। ठीक है, ध्यान दीजिए। एंड व्हाट यू शुड डू, यू शुड काउंट द कार्बन्स आफ्टर यू आर डन, क्योंकि ये मिस्टेक्स बार बार हो रहे हैं ना। सो द ओनली थिंग यू कैन डू इज यू कैन काउंट द कार्बन्स व्हेन यू आर डन। ठीक है, यहाँ पे यू विल बी गेटिंग CH2 and a positive charge here on this carbon, CH3, CH, CH, CH3. Here you will have CH3. Here you will have a positive charge. Is it clear? Yes or no? All of you tell me. Yes. अब ये बताइए हनीफा, ये कितने का यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं हनीफा? The first one. ये यहाँ पे ये ब्लू एरो जो दिखाया ना यहाँ पे हमने, कितने हाइड्रोजन हैं? नहीं दिख रहा क्या? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं सर्कल जो किया है हमने? 2. आपने कितना लिखा है देखिए? रिफत, कितना लिखा है आपने? रिफत, how many have you written there? Tell me. Yes, sir. हाँ? Sorry, I couldn't hear you for a moment. How many hydrogens are here? 2. How many hydrogens have you written in your notebook? Sorry, I wrote the question wrong. देखिए मार्क्स कट जाएंगे इसमें, ठीक है? मतलब मार्क्स क्या कट जाएंगे, टीचर भी गुस्सा हो जाएगा क्योंकि यू आर मेकिंग 5 बॉन्ड्स विद कार्बन। हाँ, दूसरी चीज थर्ड वाले सवाल में ये आपने पॉजिटिव चार्ज ऐसे क्यों लगाया है? ये सिर्फ टेल मी, बॉन्ड के साथ नहीं होगा ना, कार्बन के ऊपर बस पॉजिटिव चार्ज रहेगा लाइक दिस। ओके, या तो ऐसे यहाँ पे लगा दी कहीं पे भी, बट इट शुड नॉट बी विद बॉन्ड। ठीक है, नाउ once you are done with all the carbocations, once you are done with all the carbocations, what you can see that there will be a shift because this is 1 degree and just adjacent to it you have here what, here you have 2 degree, है ना? यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो कार्बन है कितना 3 डिग्री, यहाँ पे आपके पास what is this 1 degree and here you have a carbon which is 3 degree. Similarly here you have 1 degree carbon and here you have 3 degree carbon. Whenever you have this type of situation there will be a shift. Now what is going to shift? In the first case, as you can see here, what is going to shift? Here you will be shifting. Here what you will be shifting? You will be shifting here
this, and there will be a ring expansion like this. The CH2 is there. Like this, there will be a ring expansion. Okay. And then further on, you will be getting a product. यहाँ पे positive charge आ जाएगा. The OH will attack here and you will get a product like this. OH. Here you will be shifting the alkyl group like this. There will be a ring expansion. Just copy whatever I am doing. यहाँ पे. First of all, you will make something like this and positive charge here. Okay. Further on, you make a proper structure like this. And the OH will attack. नहीं, यहाँ पे तो OH था. यहाँ पे you have KCN. So CN will attack here. And you will be getting CN molecule like this. Here, what is going to happen? The hydride will shift. Alkyl क्यों नहीं shift कर रहा? Alkyl यहाँ पे shift हो जाएगा तो फिर से ये 1 degree हो जाएगा. So you have to preserve this alkyl, and that is why you will be getting CH3. Here you will be having carbon, CH2, CH3, and CH3. The positive charge here. Now the AgCN will attack, and you will be getting ANC, CH2, CH3, CH3. I write this fast. अब सवाल देंगे, होगा या फिर नहीं समझ में आया? Please tell me, Ifa, Rifat, and Zan. Sir, I didn't get the question. I just wrote the major products. You just wrote the major products. Yes. आपने जो आंसर भेजा है, कौन सा सही है उसमें? कोई भी सही नहीं है ना. रीअरेंजमेंट होगा वहां पे. अभी तो उसकी वजह से हमने रीअरेंजमेंट कराया है. ये तो एकदम बिल्कुल सेम सवाल था, ये वाला है. सेम तो इस तरह का कराया, और उसमें आपने पॉजिटिव चार्ज ऊपर लगा लगा के डाल दिया वहां पे. दोस प्रोडक्ट्स आर रॉन्ग ना. Yes. तो साइक्लोहेक्सेन बनाया आपने, लेकिन उसमें पॉजिटिव चार्ज डाल दिया. सो दैट इज नॉट राइट. बट अबाउट हनीफा एंड रिफत, Understood. प्रैक्टिस कीजिए इसको ऐसे जैसे हमने बनाया, फिर उसके बाद भेजिए. आप लोग मतलब छापने में भी गलती कीजिएगा तो फिर कैसे होगा? राइट दिस डाउन एंड सेंड इट टू मी. देखना हमको क्या लिख रहे हैं आप लोग. If you will copy this down, then it is going to be problematic, no? Do it and then send me.
हाँ, now it is correct. Okay. अरे हुआ है, जल्दी भेजिए ना रिफत, आमना and हनीफा. It's going to be 1 hour, है ना? देखिए. Sir, I've sent it, but it's taking time to load. Okay. What about Rifat? Sir, yes. I sending the. क्या? Sorry, what? Sorry, I'm taking the photo. अच्छा अच्छा. रिफत देखिए ना, ये आरओ के ऊपर सीन बनाया है हमने, ठीक है? रिफत, Yes. ये आरओ के ऊपर सीन है, ये पॉजिटिव सामने, वहां से काटिए, वहां से सीन हटाइए. Okay. आपने पॉजिटिव चार्ज के सामने सीन लिखा हुआ, पता नहीं क्यों. ये आरओ के ऊपर है सीन, ठीक है? हाँ. ठीक है. नाउ व्हाट, हियर फ्रॉम हियर यू कैन जनरलाइज वन पॉइंट. हनीफा, आपने भेजा क्या? हनीफा, ओके. द बॉन्ड इज मिसिंग, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनाया आपने, ठीक है? प्लीज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. All right, sir. गॉड, ये देखिए फिर से ये वाला स्ट्रक्चर आपने गलत बनाया है हनीफा, ऐसे कैसे काम चलेगा? मन नहीं लग रहा आपका इंडिया में? हाँ हनीफा, Yes, sir. सीधे स्ट्रक्चर ना, ये वाला जो कार्बोकेटन बनाया आपने अपने इसमें, देखिए सही है गलत है? Yeah, I'll correct that. कितनी दफा हो गया ये सेम चीज, बताइएगा हनीफा. I'll correct it, sir. हाँ. Whenever there is 3-degree carbon adjacent to, है ना, that means just nearby. Adjacent मतलब एकदम next carbon में आपके पास whenever there is 3-degree carbon adjacent to 1-degree carbocation, look for rearrangement. ठीक है, लुक फॉर रीअरेंज. फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख रहे हैं, प्लीज राइट, इसको लिखिए एंड देन लुक हियर. देयर इज iodine and here you have CS3. They are doing reaction with, let us say, AgNO2. Okay, AgNO2. So first you will remove this, and what is the carbocation that will make? That you will make. ठीक है, ये ड्राइंग का आदत रखिए आप लोग. इफ यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ, कार्बोकेटन क्या बनेगा? एवरीथिंग इज एज इट इज. यू विल रिमूव द आयोडीन एंड यू विल ऐड अ पॉजिटिव चार्ज हियर. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, दिस इज व्हाट
This is 2 degree, and there is what here is you are having 3 degree. Yes or no? Can all of you see that? Yes or no? Please tell me. Yes. है ना, बगल में आपके पास क्या है? More stable carbocation is there, right? There is more stable carbocation in just in the adjacent carbon only. There you have more stable carbocation. Now what is going to happen? You will be doing rearrangement. Yes or no? What you will be doing? Rearrangement. Rearrangement कैसे होगा यहाँ? See. First of all, there will be a hydride shift. यहाँ पे आपके पास देखिए 3 bonds है. That means you have 1 hydrogen here. That hydrogen will shift. इसको लिखते हैं इस तरह से है. You write it like this, okay? This is the convention for shifts, right? 1,2 H shift. So hydrogen यहाँ पे जो था shifts here, and here यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? Positive charge खत्म हो जाएगा, and you will be getting a CS3 positive charge here. जहाँ से hydrogen निकला वहाँ से आपको वहाँ से क्या हो जाएगा? There you will be getting a positive charge. Further, this AgNO2 will react, and you will be forming NO2 here, CS3 here. ठीक है, इसको भी लिखिए. Then all of you, yes or no, please tell me. Yes, Hanifa and Zad, done. Yes. Hanifa, what about you? Done. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now write elimination reactions. Elimination reaction. Please write the reaction in which atoms or group of atoms or group of atoms of substrate mean the organic reactant are removed from adjacent carbon in the presence of a base to form unsaturated compound of hydrocarbon is called elimination reaction. Please write this down. From adjacent carbon. This is important. Neighboring carbons. लिख लिया? Yes or no? Please tell me. Both of you are done writing this? Yes or no? Yes. Okay. Now write types of elimination reaction. Okay, types of elimination reaction.
Now there are two types of elimination reaction. One is E1. The other is known as E2. In even elimination reaction, the two steps, they happen in two different steps. This is two-stepped, and E2 is what? It is single step. Okay. So here what happens? Step one. First step is the cleavage of CX bond. That means the CX bond will first break. So you have something like this. Carbon, carbon, there are some bonds. Here you have X and here you have hydrogen. Okay. So what will happen? The first step will be cleavage of CX bond. And whenever CX bond will cleave, whenever the CX bond will break, the halogen atom will take the electron because it is more electronegative, and you will be getting C positive. So again, what are you getting? You're getting a carbocation. And whenever you get a carbocation, there is a chances of rearrangement. ठीक है? तो यहाँ पे भी आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा? There can be rearrangement. Okay, just keep that in mind. It is not that always it will happen. And in your case, तो 12th standard it was rarely, है ना? NCERT में CBSE exams में it will rarely happen. But please keep in mind that rearrangement can take place. Step 2 is the cleavage of CH bond. Now, in cleavage of CH bond, hydrogen, it is like this, and a positive charge. So this hydrogen will break, right? This hydrogen will break, and base का काम क्या होता है? What is the use of base? So base will come and it will take the electron. It will take the hydrogens, and this electron will go here, and you will be getting C, double bond C, like this. So what is this now? This is a unsaturated hydrocarbon alkene. Plus you will get base and H. Okay. So what is the use of base? Base is used for abstraction of proton. Abstraction of proton. It is abstracting and it is eating up the proton. Now in E2, what happens? Both steps occur simultaneously. Both steps occur simultaneously. That means the base is here. What is the use of base? Base will eat the hydrogen, and this bond will come here, and this will go here, and you will be getting BH plus X negative will be here, right? यहाँ पे भी आपके पास X negative मिल जाएगा आपको. Will you please write this down? Both of these are known as beta elimination only. Okay, the types of elimination reaction, but both of these are what examples of beta elimination. Why? Because you can see this is alpha carbon. The carbon directly attached to halogen is alpha carbon, and the next carbon is beta. So here the beta hydrogen, it is getting abstracted by the base. That is why it is known as beta elimination. Done all of you? Yes or no? Please tell me. Yes. Done. Okay. There are a few examples of elimination reaction that you are going to see here. First one that we will study is dehydrohalogenation.
हालोजनेशन, ठीक है, जिसको हम लोग इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. सेकेंड इज dehydrohalogenation. That means what is getting removed? Hydrogen is getting removed and halogen is getting removed. Both the things are getting removed. Hydrogen and halogen. These are the two atoms which are getting removed. Then you have dehydration. In dehydration, what is getting removed? H2O is getting removed. एक atom से hydrogen, दूसरे atom से क्या होगा? H and OH. So at least you can see that water H2O is getting removed. That is why it is known as dehydration. Removal of water. That you will learn in alcohols. Yeah, in alcohol. Then the other is dehalogenation. Halogenation, dehalogenation means what? Two halogen atom will be. एक atom से Br, दूसरे atom से Br. एक atom से fluorine, दूसरे atom से fluorine. So if you have this type of removal, then it is known as dehalogenation. Okay, so these are the examples of elimination reaction. So dehydrohalogenation, we will see this in this chapter. Dehydration we will see in the alcohols, phenols, and ether. Write this down and then write the topic. Dehydrohalogenation. Of alkyl halides. One thing is to clear what will be formed. Alkenes will be formed. Okay. Dehydrohalogenation of alkyl halide. Please write. The most important one is with the reagent alcoholic OH. So I'm writing with this only. When alkyl halide reacts with alcoholic KOH, alcoholic potassium hydroxide, then it undergoes dehydrohalogenation, and it will give what? And it gives alkene. That means if you have something like this, CH2, so this is hydrogen here, और इस CH2 के पास क्या है? Chlorine है. And what is the reagent we are using? Alcoholic. Please remember this is alcoholic, not aqueous. Aqueous KOH होगा तो substitution. Alcoholic KOH होगा तो it will be giving you elimination. उसका क्या reason है? That also you will write. And the product will be what? Both of these hydrogen and carbon bond will be broken. Chlorine and carbon bond will be broken, and you will be getting CH2 double bond CH2. CH bond broken. CX bond will be broken. And what will be there? This will be formed. The pi bond will be formed. Okay, जो एक एक्स्ट्रा है वो बनेगा. ट्रिपल बॉन्ड मत बना लीजिएगा. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पे. ओके, C double bond C will be formed, and there is a small bit of heat is also required here. Please write this down. Let me know when you're done. The byproducts, if you want to write the byproducts will be KCl and H2O. These will be the byproducts. Please write this down. Let me know when you're done. So done. What about others? Done? Done.
हनीफा आप बताइए क्या होगा इस रिएक्शन में? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्या है? हनीफा इज नॉट हियर। रिफत आप बताइए। वंस अगेन। नहीं, आवाज ही नहीं आ रही ना आपकी तो। एलिमिनेशन। वाई एलिमिनेशन? केवल तो सब्स्टिट्यूशन में होता है ना, एलिमिनेशन क्यों हो रहा है? क्या फर्क है दोनों में? बिकॉज व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द रिएजेंट फॉर सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन केवच है वहां पे ना, बट कैसा केवच है? सब्स्टिट्यूशन में कैसा केवच है? aqueous aqueous, and in elimination it is alcohol. alcoholic KOH. ठीक है, so first thing is elimination. Elimination में what is the product? What will be the product in elimination reaction? What will be the, अच्छा ये बताइए कौन से बॉन्ड ब्रेक करेंगे यहाँ पे? There are bonds broken and bonds formed. Which bond will be formed? बताइए, tell me. Hydrogen bond will be broken. नहीं, ऐसे नहीं लिखा है हमने। क्या लिखा है? बिल्कुल एग्जैक्टली वही बताइए, तभी आपके मार्क्स मतलब मिस्टेक्स नहीं होंगे। What I have written, tell me. Carbon hydrogen bond will be broken. Very good. And which bond will be broken? Carbon halogen bond will be broken. Carbon halogen bond will be broken. But what you have to remember is those carbons where you are having carbon hydrogen and carbon halogen bond, those carbons should be adjacent. कैसे होने चाहिए? Adjacent. Adjacent. So first of all, what bond you will break? You will break the CX bond, carbon halogen bond. Did you identify which carbon is that? Yes or not? Please tell me. कौन सा break करेगा? 1, 2 and 3 में? Br. Which carbon? Tell me. In which carbon? ब्रोमीन कौन? सेकेंड वन से आपका हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, तो सेकेंड वन से आपका हाइड्रोजन निकल गया। ओके, यहां से यू विल बी ब्रेकिंग, CBr बॉन्ड विल बी ब्रोकन। ठीक है, तो यू विल रिमूव द Br। ओके, नाउ व्हाट एल्स? कार्बन हाइड्रोजन, किसका कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक करेगा? 1 या 3? 3। 1 का नहीं कर सकता? रिफत, टेल मी। Not sure. 1 and 3 aren't they same? Yes. They are same, na? So 1 or 3. What you will say? 1 or 3. 1 or 3. Okay, 1 or 3. So you will break 1. अब ये बताइए, एक काम करते हैं, we are breaking the carbon hydrogen bond of the first carbon. ठीक है, इसका हम लोग क्या ब्रेक करेंगे? CH bond. अच्छा, when I have broken the CH bond, what will be there? Tell me, क्या बचेगा? CH bond with CH3. है? अरे यहाँ पे बताइए ना, इसका क्या होगा पहले? क्या बचेगा यहाँ पे? हाइड्रोजन हटा दीजिए। हाँ, CH. CH, 3 हाइड्रोजन, कितना CH हो? हाँ, बोलिए ना, साफ साफ बोलिए। हाँ, देन CH and then CH3। नाउ these two carbons, जहां से बॉन्ड ब्रेक किया वहां पे you have to put a double bond। आसान है? yes or no? Please tell me। Yes. ज़ैद, आपको आया समझ में? yes or no? Yes. Okay, write this down। You will write the product, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? ठीक है, फर्स्ट वाला करके बताइए।
sir. Hmm. Not getting the second. हाँ, सेकंड वन में देखिए, सबसे पहले व्हाट यू हैव टू नो, यहाँ पे देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकंड स्ट्रक्चर. द ओनली डिफरेंस इज दैट आई हैव नॉट शोन द हाइड्रोजन्स. इज दैट राइट यस और नो रिफत? Yes. एग्जामिनर भी आपको हाइड्रोजन्स नहीं दिखाएंगे, ठीक है, दे विल नॉट शो द हाइड्रोजन. सो हाउ विल यू वर्क देन? You have to know how many hydrogens are there. आपको तो ये पता है ना, if I mark the carbon 1, 2, 3, 4 and 5. So you know from which carbon will we break the halogen? बताइए, CX From bond कहाँ पे first. break? First carbon. तो आपको पता है कि the important carbons are the adjacent ones, right? Yes or no? Yes. Hydrogen will be removed either from here or from here. ठीक है, अब बताइए दोनों सेम है? Yes or no? Yes. ठीक है. How many hydrogens are there? Hydrogens here? Yes or no? Tell me. Yes. Fifth. कितने हाइड्रोजन्स हैं? One. How many hydrogens? Sorry, नहीं पता. नहीं पता तो बोलिए नहीं पता. Nine. नहीं पता. One. नहीं नहीं, फिर आप 1 2 क्यों बोल रहे? नहीं पता तो फिर नहीं पता बोलिए ना. ये क्लास याद है आपको? Yes. So should we इसमें हमने should we do both the products, major and minor? मेजर माइनर हो गए नहीं. Okay. एक चीज आप याद रखिएगा, whenever you have bond line structure, number of hydrogen is equal to 4 minus number of bonds. याद रहेगा? Yes. तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे बताइए इस फिफ्थ वाले कार्बन में? हाउ मेनी? जोर से बोलिए रिफत, आवाज नहीं आई. One. कितने बॉन्ड है फिफ्थ कार्बन के पास? One. कितने बॉन्ड है फिफ्थ कार्बन के पास? कितने लाइन दिख रहे फिफ्थ कार्बन पे? One. अरे 1 कैसे दिख रहा है? 2 है ना यहाँ पे. अब हाँ, मतलब हम it's इसमें side. तो कितने हाइड्रोजन्स हो जाएंगे सेकंड कार्बन में? ध्यान है कि नहीं है बताइए, गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आदमी को. हम यहाँ पे पूछ रहे कितने लाइन से, आप उसमें भी बोल रही हैं कि एक ही लाइन है, एक ही लाइन. 2 बार मुझे एक ही लाइन है आप बोली जा रही. ठीक है, तो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स रिफत, है ना. बोथ द कार्बन्स आर सेम, सो व्हाट यू कैन डू, ये Br हट जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा. विल मेक दिस एंड जस्ट राइट अ डबल बॉन्ड लाइक दिस. ठीक है, Yes. ओके. इस वाले इसका भेजिए, आप फर्स्ट वाले का भेजिए. Zad, you have sent me photo. सही है. मेजर माइनर क्यों बोल रहे थे आप जैद? Sorry. रिफत हमें भेजिए फर्स्ट वाले का आंसर. अच्छा आपने भेज दिया, ओके, वेरी गुड. देखिए आ गया आपको, है ना. चलिए, नाउ लेट अस राइट अ क्वेश्चन लाइक दिस. ध्यान से देखिएगा जैद एंड रिफत. व्हाट हैपेंड? हनीफा इज नॉट बैक. Br, okay. 1 2 3 4 alcoholic KOH. रिफत यू विल टेल मी कौन से कार्बन से CX बॉन्ड कटेगा? फ्रॉम विच कार्बन विल वी ब्रेक द, हाँ टेल मी. Second. सेकंड, ठीक है. सो सेकंड से हो जाएगा, वेरी इजीली आइडेंटिफाइबल.
Now, which are the carbons which are important, that are important to us? First and third. First and third. तो fourth को हटा देते हैं, ठीक है? Can you see how you have to focus and किस तरह से आप यहाँ पे अपना जो focus है, what जितना ही बड़ा compound हो, what you can do, you can center your focus towards that carbons and surrounding those carbons which are important and where the reaction can happen. ठीक है? So first and third. अब बस first and third को देखना है. Now, what do we see here in first and third? Are they same or are they different? Yes or no? Different. Different. Okay. That means what can happen? I can make two different product here. I can either make something like this. Yeah, so double bond will be with 1 and 2. And there will be a double bond between 2 and 3. These are the products that we can form. Yes or no? Please tell me. Yes. Okay. Now, अच्छा ये बताइए, which is, when I say which structure above has more alkyl group around C double bond C? ये बताइए तो, what do you think? कहाँ पे ज्यादा ग्रुप्स अटैच्ड हैं C double bond C के अराउंड? In the first structure or second structure? Second. दिख रहा है साफ? Yes or no? Yes. Okay. Now these carbon, these alkenes, these are more stable. Okay, this is more stable. Okay, and that is why it will be major product, and this will be minor product. ये याद रहेगा? Yes or no? Please tell me. Yes. Which alkene you will prefer? You will prefer the alkene which is more substituted. It has more alkyl groups around it. The reason जो भी है वो बाद में लिखाएंगे. First of all, what we will do? We will practice a few questions. ठीक है? Yes or no? Please tell me, all of you. Yes. That आपको आ गया? Yes or no? है ना? आप तो लगता है पढ़ के ही रखें. मेजर माइनर बना दे सर, जहां नहीं बन रहा वहां पे भी बनाना है जैद को. Okay. Now one thing before that, what I will do? You will write the following reagents. Following reagents are used, or either right are also used for dehydro halogenation. सही है? Any doubt? No. No. Okay. What are the following reagents? Number 1. एक तो alcoholic KOH है that we have used, or what you can use? You can use also alcoholic NaOH. Second is RONA, sodium alkoxide बोलते हैं इसको, in the presence of ROH, alcohol. It is not or लिखना रहेगा, हम ऐसे और लिखेंगे. This is in the presence of. Third is NaNH2. This is known as sodium amide. तो whatever you were doing with alcoholic OH, ये दोनों reagent भी रहेंगे, तो आप लोग वही same reaction कीजिएगा. Is that clear? Yes or no? Rifat and Zaid? You will Yes. do with the same Yes. reaction. Okay, you will do the same reaction. ठीक है? चलिए. And जहां पे अगर आपके पास दो different carbons हो adjacent में, then you will be forming alkene, which is जिसमें क्या है आपके पास, इसमें ज्यादा number of R group या फिर alkyl group ज्यादा हो, which is more substituted, as we say. ठीक है? So please write some questions. Write the major products. ये लिख लिया आपने तीनों reagent? Yes or no? Yes. Okay.
Write the products and then send it to me. Okay. So in the first question, NH3 will be produced. वो छोड़ दीजिए आप. Okay. Just write the major product, ना. You just have to write not the byproducts. रिफत हो रहा है या नहीं हो रहा है? Yes, रिफत. Okay. Okay, both of you have sent the answers. देखिए रिफत आपके मार्क्स कहाँ कटेंगे बता रहे हैं. Look at the first major product. Looking. वहां पे Yes. देखिए आपने CH3 की जगह CH2 लिख दिया है. राइट, yes or no? Yes. अब देखिए
the answers here will be, तो आपने सही लिखा है, Br as it is बना दीजिए इसको. You can either have a double bond here or here, एक double bond यहाँ पे plus you can show CH3 double bond यहाँ पे, this will be your major, ये माइनर होगा. ठीक है, देखिए सेकंड वाले में देखिए आप, this is the carbon, yes or no? Yes. Right? Okay. So see here you have 1, 2 and 3 different carbons. इसमें 2 और 3 same है. Is that right? Yes or no? Please tell me. Yes. है ना? Rifat, can you see that? Yes. Okay, so that means you can either say that there are only 2 options, 1 and the second option, because 3 to 2 same ही है दोनों. That is why you can either have a double bond like this. अब यहाँ पे देखिए ये CH3 जो है ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, CH2 double bond, and the other double bond that you can have is between that carbon and the second carbon, and this CH3 will be as it is. As you can see, this is having more R groups, that is why this will be major, and ये आपका minor होगा. आपने minor तो गलत बनाया है, लेकिन major जो है आपका सही है, but you again have written CH2 rather than CH3. Okay? Yes. ये आपका सही है बिल्कुल. All of these carbons are same, but आपने यहाँ पे एक bond extra बना दिया बस. This will be CH3 carbon double bond CH2. This will be CH3. So this will be your product. What about Zad? Zad आपका एक बार देख लेते हैं. हाँ, मेजर सही है.